Good evening, students. Online students, am I audible? Okay. So we will start new topic, GMA, stand for General Mental Ability. I just explain what is this GMA, okay? And what we are going to discuss in this GMA topic, okay? GMA stand for General Mental Ability. And about this GMA, even UPSC is not clear what is GMA. See here, if you check UPSC syllabus, they mention about general mental ability. And even prior to CSAT, prior to 2011, if you check GS prelims syllabus, there also they mention GMA. And prior to 2011, they used to ask aptitude question, and each and every question they call GMA question. They have asked blood relation question prior to 2011. That also according to them GMA question. They have asked question on profit and loss. They have asked question on permutation combination. Each and every question prior to 2011 according to UPSC GMA question. But after 2011, okay, still there is a confusion. But let us clear confusion under GMA. What type of questions we are going to discuss? Now here, all of us have clear idea about quantitative aptitude question, like time and work topic, profit and loss topic, partnership. So all this topic like quantitative aptitude topic. उनको हम quant topic बोलते हैं या quantitative aptitude topic. Other part is reasoning. I include verbal, non-verbal, analytical, critical. Any type of reasoning I include here. Or you can say some student they like classify reasoning like math based reasoning, English based reasoning. अगर सिंपल तरीके से देख ले कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो मैथ बेस है और रीजनिंग के क्वेश्चन जो इंग्लिश बेस है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट इज DI and DS. DI stand for data interpretation, DS stand for data sufficiency. So we have clear idea about the question related to quantitative aptitude. We have clear idea about the question related to reasoning. We have clear idea about the question which are DI and DS question. Okay. Now जो बच गया वो GMA. It's like जिसका कोई माई बाप नहीं है वो GMA. That is the clear idea about GMA. If you know a question belong to quantitative aptitude, okay. If you know this question belong to reasoning, okay. If you know this question is of DI, DS, okay. बाकी जो भी बच गया that you can discuss under GMA. Like what we will discuss today about GMA or under this GMA, counting of squares, counting of rectangle, counting of parallelogram, counting of rhombus, and counting of triangles. Okay. So this and some other topic also you can include under GMA. So first we start with counting of squares. Like here they will give this type of figure. And they will ask number of squares in the given figure. Okay. Either you can do manual counting 1, 2, 3, 4, 5, 6. But it can be a bigger figure where manual counting is time consuming. You can't count one by one. Okay. So we need short trick for squares counting. I give you a short trick, but before that I tell you one thing. Now after the birth of the child in the family, what is the next activity? नामकरण. ठीक है. एक ने पिछले बैच में बोल दिया सेल्फी. ठीक है. ठीक है. आजकल ट्रेंड चल रहा है कि तुरंत सेल्फी डालनी है भैया. चलो वो पार्ट है. But main is like here we have to name the child. Otherwise there will be confusion. Everyone will like चुन्नू मुन्नी type इस तरह का नाम रहेगा. We have to give the name to avoid confusion. Similarly here, first thing is for this figure we have to name this figure so that there will not be confusion. And how we will name this figure like column row. Okay. And there is no surprise. I found some student they are confused about column and row. ठीक है. कॉलम और रो में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं. आई गिव ए आइडिया. इन बिल्डिंग दिस पिलर्स आर कॉल्ड कॉलम.
तो वर्टिकल्स आर कॉलम, जो बिल्डिंग के पिलर्स है उनको भी कॉलम बोला जाता है, ये जैसे ये कॉलम डला हुआ है यहाँ पे, तो वर्टिकल्स आर कॉलम, हॉरिजॉन्टल्स आर रो. So this is first column, this is second column, this is third column, and row, this is first row, this is row number 2, this is row number 3. Or how you can name this, you can put numbering like 1 2 3, these are 3 row, 1 2 3, these are 3 column, so we can name this figure 3 by 3. So this figure here is 3 by 3. It can be 2 by 2, like here 1 2 1 2. ये फैन कम करना थोड़ा सा. So it is 2 by 2. Like here, how we will name this figure? Like here 1 2 3 4, 1 2 3 4. This is 4 by 4. Okay. हाँ, एक ने लिखा ऋतिक रोशन, हॉरिजॉन्टल रो. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, जैसे मर्जी याद रखो, बट यू हैव टू रिमेंबर इट. ठीक है, वर्टिकल्स आर कॉलम, हॉरिजॉन्टल्स आर रो, you have to remember it. So here first thing is you put heading squares. I take two type 1 question, like if the given figure is 3 by 3, 2 by 2, 4 by 4, 5 by 5, it means in the given figure number of column and number of row are equal. It is n by n figure. N by n figure is like 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, 6 by 6. Okay. So now here, like for example, this is 3 by 3 figure, where we have 3 column, 3 row. I give you the short trick. Okay. Now the formula which I give you, it seems difficult, but I tell you that is very easy formula once we use it. So here in n by n figure, if we have to count number of squares, our formula here is you start with the given value n into n. Start with the given value n into n, plus subtract 1 from this n, subtract 1 from this n, and multiply. N minus 1 into n minus 1, plus further subtract 1 1. Further, if you subtract 1 1, we get n minus 2 into n minus 2, and so on. I repeat, start with the given value n into n, keep on subtracting 1 1 and multiply. So it is n minus 1 into n minus 1. Next is n minus 2 into n minus 2, and so on. You keep on subtracting 1 1. In the last, you get 1 into 1 plus 0 into 0. The moment you get 0 into 0, you stop. It seems difficult, but when we use this formula, it is very easy. ठीक है, जब हम इसको यूज करेंगे ये काफी इजी है. Let me solve 3 example. Like here, my first example is I take a figure 3 by 3. 3 column, 3 row. So we name this figure as 3 by 3. What do? You start with the given value 3 into 3 plus subtract 1 1, 2 into 2, plus further subtract 1 1, 1 into 1 plus 0 into 0. You start with the given value and keep on subtracting 1 1. Automatically answer आएगा 3 into 3, 2 into 2, 1 into 1, 0 into 0. So this is 9 plus 4 plus 1 plus 0. This is 14. In this given figure, we have 14 squares. We will cross check whether I have given a correct formula or wrong formula. We will cross check. Like here, I take this figure. Small figure, so we can check manually. So we check in this given figure how many squares are there. 1, 2, 3, 4, and the larger one 5. We have 5 squares, 4 छोटे, 1 बड़ा.
So here what we will do, we name this figure as 2 by 2. So now here 2 into 2 plus 1 into 1 plus 0 into 0. That's it. So this is 4 plus 1, 5. So in this given figure, how many squares are there? 5. Now I take one more question. Now this given figure is 4 by 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ये ऐसे भी चेक कर सकते हो. There are 4 column and 4 row. So given figure is 4 by 4. According to our short trick, you have to start with the given value 4 into 4 plus 3 into 3 plus 2 into 2 plus 1 into 1 plus 0 into 0. So it is 16 plus 9 plus 4 plus 1. 25, 29 plus 1, 30. So in this given figure, we have 30 squares. No need to check manually. Answer is 30. Okay. I ask you 2 questions. Take time. Keep answer with yourself. In the given figure, check how many squares are there. Okay, what is your answer? 55. So this given figure is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. This is 5 by 5 figure. So what we have to do, we have to start with the given value 5 into 5 plus 4 into 4 plus 3 into 3 plus 2 into 2 plus 1 into 1 plus 0 into 0. So this is 25 plus 16 plus 9 plus 4 plus 1. Smart people, what they have done, they already know this is 30 plus 25. Last question में कर चुके हैं, but you can check 25 plus 16 41, 41 plus 9 50, 54 plus 1 55. In this given figure, how many squares are there? 55. Try one more question. Keep your answer with yourself. तभी कह रहा हूँ अपना आंसर अपने पास रखना चाहिए. Now this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this given figure is 6 by 6. So it is 6 into 6 plus 5 into 5 plus 4 into 4 plus 3 into 3 plus 2 into 2 plus 1 into 1. This is 36 plus 25 plus 16 plus 9 plus 4 plus 1. So here if you add, what is your answer? 91. 91. 55 plus 36, 90. So type 1 is where number of column is equal to number of row
when it is n by n figure, start with the given value n by n, then keep on subtracting 1 and multiply. Now here type 2. Type 2 here is where number of column and number of row are not equal. And here for our topic, it doesn't matter. You name this figure as 6 by 4 or 4 by 6. Doesn't matter. First you take column or row, answer will be same. See here where number of column is not equal to number of row. Like in this case, we have 4 column and 6 row. So it is 6 by 4 figure. It can be this also. 5 by 2. 1, 2, 3, 4, 5, 2. You can name it 5 by 2 or 2 by 5. It can be 3 by 4 figure. It can be 4 by 8 figure. It can be 3 by 7 figure. So idea here where number of column and number of rows are not equal. Easy to manage, I tell you how come. Type 1 n by n figure. Where number of column n, number of row n, type 2 n by m figure. Where number of column n, number of row m. In the first case, what is our formula that we already done? N into n plus n minus 1 into n minus 1 into, plus n minus 2 into n minus 2 and so on. Start with n into n, keep on subtracting 1 more. In the second case, when it is n by m figure, we start with the given value. n by m, so start with n into m. जो दिया उसी से start कर रहे हैं. n into m. Here also rule is same. Keep on subtracting 1, 1. So you write n as n minus 1, m as m minus 1. Further subtract 1, 1, n minus 2 into m minus 2. There are two value, one smaller and you are subtracting 1, 1. Smaller value will become 0 first. जैसे ही एक value 0 बन जाएगी, 0 into something 0 stop. रुकना कहाँ है जब value 0 हो जाए. Here 0 into 0 stop. Here if one of the value becomes 0 stop. I take two examples for this type 2. It is easy, don't worry. Here it is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So we name this figure as 5 by 3. So according to our rule, we start with 5 into 3 plus. Subtract 1 from this 5, 4. Subtract 1 from this 3, 2. I repeat, 5 into 3, okay. Why this is 4? 5 minus 1. Why this is 2? 3 minus 1. एक एक subtract करना है. एक 5 में से subtract करना है, एक 3 में से subtract. और वही repeat. 4 में से एक subtract करना, 3, 2 में से एक subtract करना, 1. So 5 into 3, 4 into 2, 3 into 1 plus 2 into 0. 2 into 0, 0, so stop. अब यहाँ क्या आएगा? 2 into 0, so you have to stop. So now here this is 15 plus 8 plus 3. So it is 23 plus 3, 26. So you start with the given value, keep on subtracting 1, 1, multiply and add. I take one more question. ये थोड़ा जूम आउट करना है कैमरा क्योंकि कॉर्नर दिख नहीं रहे यहाँ पे.
1 2 3 4 5 6 1 2 3. So here this is 6 by 3. Okay, so according to our rule, we start with the given value 6 into 3 plus 5 into 2 plus 4 into 1 plus 3 into 0. 6 into 3 से start करना है, then you take 1 less and 1 less. 6 minus 1 give you 5, 3 minus 1 give you 2. फिर further subtract 1, 5 minus 1 give you 4, 2 minus 1 give you 1, and then 3 into 0, but 3 into 0 0, उसकी कोई value नहीं, you have to stop here. This is 18 plus 10 plus 4. So it is 28 plus 4, 32. So in this given figure, how many squares are there? 32. You try one question. In this given figure, see how many squares are there. What is your answer? So this is like 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 by 4. So this is 5 into 4 plus 4 into 3 plus 3 into 2 plus 2 into 1. So this is 20 plus 12 plus 6 plus 2. So here our answer is 40. In this given figure, how many squares we have? 40, 40. We revise square. Type 1, okay. If it is n by n figure, so this is n into n plus n minus 1 into n minus 1 plus n minus 2 into m minus 2 and so. Type 2 for square, if it is n by m figure, so it is n into m, n minus 1 into m minus 1 plus n minus 2 into m minus 2 and so. Any doubt? No. Okay. Achha, there is one announcement. See, I had discussion with my team. So there is one good news for you people. Okay. See, for your foundation course, we are including mentorship feature. ठीक है, CSAT mentorship for you free of cost. ठीक है, अगले batches से like we will increase the fees, that is different case, but for you people we are not charging anything extra. So I tell you क्या क्या है, but these are for only registered user, जिनके हमारे पास registered email ID है. ठीक है, अच्छा कोई अपने दोस्त के साथ शेयर तो नहीं कर रहा है? क्या होता है उससे मैं बताता हूँ. You have only 3, जो जिनके पास हाइब्रिड है मेनली, आई टेल यू हैव ओनली 3 ईयर व्यू टाइम. ठीक है, पिछली बार 4-5 एग्जांपल ऐसे आए थे, फ्रेंड ने पूरा टाइम एग्जॉस्ट कर दिया था, देन यू हैव टू परचेज अगेन. फिर आपके लिए वो टाइम नहीं बचेगा. सी इफ यू हैव टेकन हाइब्रिड, दैट इज ए फैसिलिटी टू यू कि सो दैट लेटर ऑन इफ यू हैव टू रिवाइज एनी ऑफ द लेक्चर यू कैन रिवाइज, बिकॉज ओनली द व्यू टाइम इज प्रोवाइडेड 3 आवर पर लेक्चर. ठीक है, पता चला वो पूरा उड़ा दे. Okay, I think all of you have given your email. Offline hybrid student, जब आपने यहाँ एडमिशन लिया, online also you have provided us email. So that is your registered email for us. ठीक है, वो हमारे पास आपका एक registered email है.
तो what features you are going to get, ठीक है, this is going to be like game changer, because I have seen many students, they have problem. And even the last year also I found category 1, category 2 student, they need some sort of mentorship in the program. So I have approval from my investor, from my team. So I had a discussion with the team. So we are including that mentorship for our student. And for you people, so it is the part of your course. We are not charging anything extra. So what features we will have? One thing is notes. We will not provide you notes. ठीक है, ठीक है, ऐसे स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, बिकॉज इन यूपीएससी देर इज नो स्पून फीडिंग रिक्वायर्ड, और वो होनी भी नहीं चाहिए. सी व्हाट आई रियलाइज, स्टूडेंट्स दे मेक नोट्स, बट देर आर सम इश्यू विद द नोट्स मेकिंग. ठीक है, उनकी नोट्स मेकिंग में कुछ ना कुछ इश्यू रहता है. लेटर ऑन दे फेस प्रॉब्लम. सो व्हाट फीचर वी हैव एडेड, ठीक है, इन आवर फाउंडेशन कोर्स नाउ. See here, you will make your notes. I ask you to maintain 3 register, 1 class register, 1 home register, and 1 for the gist. We will provide you email, all of you, even offline, hybrid and online student. You have to share your notes. You have to make PDF. You can use app. काफी सारी ऐप है, ठीक है, किसी भी ऐप से आप फटाफट PDF बनाएंगे and you will mail. ठीक है, आई थिंक ईमेल एक बार कंफर्म कर लूंगा जो कल मैंने बताई थी. तो एवरी 15 days you will share your notes on that email. Our mentor will check your notes properly. If there is a need of any improvement, will give you a remark. ठीक है, हम आपके नोट्स की रेटिंग भी देंगे कि आपके नोट्स कितनी रेटिंग के है 10 में से. ठीक है, तो हियर आवर मेंटर विल गिव यू रिमार्क ऑल्सो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसमें ये इश्यू है, यू हैव टू इंप्रूव दिस. एवरी 15 days यू हैव टू डू दिस. ओके, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का नोट मेकिंग का इश्यू है. लास्ट ईयर के काफी स्टूडेंट्स के नोट चेक किए, तो फिर वो प्रीलिम्स में आपके लिए प्रॉब्लम फेस होती है. एंड ऑल फॉर द रजिस्टर्ड ईमेल. जो भी हमारे पास मेल आएगी, दैट हैज टू बी अ रजिस्टर्ड ईमेल इन आवर डेटाबेस. जो आपने प्रोवाइड किया, दैट इज योर ईमेल विद अस. तो रजिस्टर्ड वालों का ही चेक करेंगे, समाज सेवा नहीं करेंगे. सेकंड फीचर हियर इज, आई विल शेयर वन गूगल फॉर्म विद यू नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे. ठीक है, आई विल शेयर वन गूगल फॉर्म विद यू वेयर, ठीक है, based on this Google form plus 1 test, I will take 1 test also next week. We will decide your category. This is also for registered user. जो अपने कोर्स के रजिस्टर्ड यूजर है, रजिस्टर्ड ईमेल से ही होगा ये गूगल फॉर्म भरा जाएगा. Because many of you are confirmed that you are category 1 student. Many of you are clear that you are category 2 student. Some of you are clear that you are category 3 student. Some of you might be still confused about the category. So we will give a test. With the help of that test, we will make an assessment about your category. For offline student, it will be in class. For online student, it will be on portal. And we will give a time bracket also of 24 hour or 48 hour. अगर in case उनका वाईफाई इश्यू है, तो वो उस पे टेस्ट देंगे. And with the help of your score, we will help you with your category. जो अब तक पढ़ा है उस पे. Number system 3 classes, percentage, and these 2 classes of GMA. We will have a test on these classes, so we can assess like where you stand, whether you are category 1 student, you are category 2, category 3 student. We will make that assessment, and even in the Google form also we will take a feedback from you. अभी थोड़ा क्लियर करता हूं, then you have a better idea about Google form. I will clear third point about Google form after 5 minutes. Now the third thing here is, we will make one telegram we have already created for you, that is for the entire class. Now here there will be category 1, category 2, category 3 student. Now we have planned one extra telegram group for a mentorship purpose. We will have a dedicated telegram group according to your category. We will have a one group for category 1. ठीक है, क्या करेंगे, actually
जितने भी स्टूडेंट है, वी डिवाइड स्टूडेंट इन 6 ग्रुप. Maybe we will have 2 group of category 1, we will have 2 group of category 2, 2 group of category 3. So here we will have 6 telegram group, where we will have less number of student in the telegram group. It will be a private telegram group. We will add you in that group. ऐसा नहीं कि कोई भी add हो जाएगा. So here same for our registered user. So we will have a dedicated telegram group. So in this Google form or with the help of this test, we will decide your category, then so that we can make your category dedicated group. What is the use of this telegram group? You can ask your doubt there. ठीक है, आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं. Mentor will be there. But what we are planning weekly 2 mentorship session for you student. One with our mentor. Like here we are dividing you in 6 group. Our mentor will have one mentorship session with group 1 on Monday, for example, with second group on Tuesday, with third group on Wednesday, with fourth group on Thursday, with fifth group on Friday, and with sixth group on Saturday. And why this Google form? See here in this Google form, we will conduct this session either at 11 or 2. So we will take your free time also. Maybe some of you are doing classes at 11 o'clock. Some of you are doing classes at 2 o'clock. So we will take. If any one of you doing classes at 11 also, 2 also, and 5 also, then you don't need any mentorship. फिर आपको mentorship की जरूरत ही नहीं है. ठीक है? Because we will have a sessions at 11 or 2 only. हम रात में mentorship session conduct नहीं कर सकते. और ये सब free features हैं आपके लिए. ये आपके लिए सुविधा है, आपका अधिकार नहीं है. ठीक है? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, मत लेना. We cannot customize this. And here this mentor session will be on Zoom live. We will not provide any recording of this. It is very much clear. इनकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी इन एनी ऑफ द केस. जिस दिन आपने रिकॉर्डिंग मांगी उस दिन हम बंद कर देंगे ये सब फीचर. दीज आर एक्स्ट्रा फीचर्स, दीज आर नॉट योर फंडामेंटल राइट्स. एम आई क्लियर? करना है नहीं करना बता देना बस. ठीक है? रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे. आपके हिसाब से कस्टमाइज नहीं होगा. या तो वो हम 11 बजे या 2 बजे का आपसे ले लेंगे. जो 11 बजे फ्री होगा उनका 11 बजे कंडक्ट करेंगे मेंटरशिप सेशन. जो 2 बजे फ्री होगा उसको 2 बजे करेंगे ऑनलाइन जूम पे. ऑफलाइन वालों के लिए भी जूम पे. इट विल बी ऑन जूम फॉर ऑफलाइन हाइब्रिड स्टूडेंट्स ऑल्सो. अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग. जूम पे यू हैव टू ऑन योर कैमरा. अगर आपका कैमरा ऑफ रहेगा, टीम आपको मीटिंग से बाहर कर देगी. तो पता चला 2 लोग बात साथ में ऐसे बैठ के देख रहे हैं, जिससे आपने 50% लिया हुआ है कोर्स के नाम का. ठीक है? वो नहीं चलने वाला. आई रिपीट, वी विल चेक योर नोट्स एवरी 15 डेज. अभी बहुत कुछ है. हर 15 दिन में आपने एक पीडीएफ बना के भेजनी है. आई थिंक इफ यू आर टेकिंग दिस मच पेन, यू कैन टेक दैट मच पेन. आप 5 मिनट लगा के एक पीडीएफ तो बना सकते हो. हर 15 दिन की बनानी है. 1 से 15 दिन बनाई, फिर नेक्स्ट 15 दिन की बनानी है. एंड वी विल मेंटेन ए प्रॉपर रिकॉर्ड. वी विल गिव यू रेटिंग. वी विल टेल यू द करेक्शन इन योर नोट्स इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ करेक्शन. अगर आपके नोट्स में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वी विल अपडेट यू. सेकेंड थिंग इज गूगल फॉर्म. I think the purpose is clear. We will decide your category. This will help us to make your dedicated Telegram group, and this will help us to allot you the slot. कि हमें 11 बजे का slot देना है या 2 बजे का आपको slot देना है. Every week you will have 2 mentorship session. One with mentor, which is in a small group. We divide the entire class in 6 group, and one with me that is also on Zoom. That will be the entire class. पूरी क्लास का एक मेरे साथ वीकली एक जूम सेशन रहेगा वेयर आई एम हैविंग योर परफॉर्मेंस विद मी. तो मेरे पास आपका फीडबैक आता रहेगा. तो आई विल कंडक्ट दैट मेंटरशिप सेशन वीकली. दैट इज ऑल्सो ऑन जूम. ठीक है? देन द 5th पॉइंट हियर इज आई एम प्लानिंग सम डाउट सेशंस. ठीक है? वीकली 1 डाउट सेशंस आई एम प्लानिंग. ठीक है? मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा,
So here that also we will take on Zoom. See this half an hour doubt session तो that is continue, वो क्लास के बाद वाला तो चलेगा, but we are planning some extra doubt sessions, ठीक है, on Zoom. उसकी भी recording नहीं मिलेगी, same thing. Some extra classes which is going to be strategy discussion, which is going to be important, ठीक है. I'm planning to take some extra classes also on Zoom, ठीक है. अगेन एंड अगेन ये आपके लिए सुविधा है, आपका अधिकार नहीं है. रिकॉर्डिंग मत मांगना, ठीक है. जिस दिन रिकॉर्डिंग मांगोगे खत्म. नाउ द 7th पॉइंट, लेक्चर नोट्स. यस, लेक्चर नोट्स, योर होम असाइनमेंट, जो मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूं वो प्लस जिस्ट, जो आपको मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला, तीनों की आपने फोटो उस पे भेजनी है. नोट्स, देयर इज अ डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट का डाउट था कौन से नोट्स, ठीक है. 7th here is from August month till your regular classes will go, till your regular classes, generally our course go for 3 months, ठीक है. तो we will have student of the month. So for you people, I think August and September month, so we will select one student of the month for August month, one student of the month for September. मिलेगा क्या student of the month को? It's your decision. Either we provide you a cash prize of 10,000, or if you want us to arrange a trip for you worth rupees 10,000, we will arrange one trip for you. If you want to purchase some books, some material from old Rajendra worth rupees 10,000, that also we can provide you. But any one of this, let me clear. Or if you are planning to purchase any course at ISA, to maybe GS mentorship in future, if you are planning, तो you will get a 10,000 rupees discount in that course. आपकी मर्जी, इसमें से कुछ भी चूज कर लें. होगा कैसे स्टूडेंट ऑफ मंथ का सिलेक्शन? We will not conduct the test for this, क्योंकि उससे क्या होगा ना, जिसका मैथ अच्छा है, जो कैटेगरी 3 है, उसी को मिल पाएगा. तो we have done brainstorming about this program. It is not about the people those belong to category 3. This is about the people those who are dedicated, those who are consistent with their performance, or those who are like consistent with the classes and everything. जो discipline है, actually it is a discipline price. बताता हूं कैसे होगा. See here, we will check your notes, so we will have a record there. Your classes, class test, ठीक है. तो हमें पता लगता रहेगा कि आपने क्लासेस सारी की हैं. You have given the class test, ठीक है. You have make your class notes properly. कॉपी मत करना किसी की, पकड़े जाओगे. पता चला क्लास मिस किया, किसी से कॉपी करती है, ठीक है. तो हियर वी विल हैव ए लिस्ट, जो भी डिसिप्लिन रहेंगे उनकी लिस्ट रहेगी मंथली हमारे पास. वी विल हैव चिट, आपके लिस्ट पे मतलब एक चिट बनाएंगे, उस पे नाम रखेंगे, फिर होगा लक्की ड्रॉ, जिसकी किस्मत में आज. नो इफ एंड वर्ड्स, ठीक है. एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, माय डिसीजन विल बी फाइनल, ठीक है. कोई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने वाली कि मैं था स्टूडेंट ऑफ द मंथ, ठीक है. क्लियर है? डिसिप्लिन के लिए प्राइस है, क्योंकि व्हाट आई विल कैटेगरी 1 ऑल्सो डिजर्व सम प्राइस. ऐसा नहीं कि सिर्फ कैटेगरी 3 को ही हमेशा प्राइस मिलता रहे. इट्स अबाउट योर कमिटमेंट, इट्स अबाउट योर डिसिप्लिन. एनी डाउट अबाउट एनी कंफ्यूजन? फाइन, ठीक है. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, will the mentorship be there throughout the year? Okay, see here, a regular doubt session till our classes will go, because it is in tune with the classes. One thing. Second thing is, when we will start our test series, we have not decided yet, but there is a thought process going on. मैं commit नहीं कर रहा हूं, ठीक है. What we are planning कि there will be 18 test, ठीक है. 10 sectional plus 8 full length test. Although you will get the recorded of each and every question, like in test 1 there will be 30 question,
I record the solution of all the 30 questions. You get video recording. You will get PDF. So we are planning, we can conduct a doubt session on the test with mentor. मतलब आपको कुछ और डाउट पूछना है टेस्ट के रिगार्डिंग, सो विद द टेस्ट ऑल्सो वी कैन प्लान योर डाउट सेशन विद द मेंटर. ठीक है, फाइन. ये अभी चल रहा है, मतलब थॉट प्रोसेस में चल रहा है. वी आर लुकिंग अबाउट दिस कि इसका कैसे वर्कआउट होगा. बाकी चीजें हमारी फाइनलाइज हो चुकी हैं, दैट इज ओके. ठीक है, सो बाय नेक्स्ट वीक वेडनेसडे आई विल शेयर वन गूगल फॉर्म विद यू. मेक श्योर you will fill that form and you will fill the registered email ID, क्योंकि we will check in the database. अगर वो मैच हो रहा होगा we will consider, otherwise we will remove that name. आपने जो भी अपनी ईमेल दिया है वही आपने यूज करनी है. हाँ जी, हाँ वो तो मिलेंगी, दैट विल गेट. नहीं, ये हम टेस्ट सीरीज के हमेशा रिकॉर्डेड देते हैं. क्या होता है मैं बताता हूँ टेस्ट सीरीज का क्या प्रोसेस रहता है. टेस्ट सीरीज में वी गिव ए टेस्ट 1 where there is a explanation. आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा इन ए फॉर्म ऑफ पीडीएफ फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट. ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए वी प्रोवाइड यू हार्ड कॉपी. जनरली व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट दे हैव डाउट इन 5-6 क्वेश्चन, दे चेक द पीडीएफ, डाउट इज क्लियर. स्टिल इफ दे हैव डाउट इन 1 or 2 क्वेश्चन, वी प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग. जो अब तक हम करते आए थे, हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे थे. दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन चेक इन रिकॉर्डिंग, योर डाउट इज क्लियर. ठीक है, दिस टाइम वी आर प्लानिंग कि वी कैन हैव ए डाउट सेशन, कि अगर आपको लग रहा है आफ्टर चेकिंग योर पीडीएफ देयर इज ए डाउट, विद द मेंटोर वी कैन कंडक्ट दैट डाउट सेशन. तो मेंटोर के साथ आपको वो डाउट करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग आपको दूंगा. मैं आपको पूरे सारे क्वेश्चंस की, इंग्लिश वाले टीचर इंग्लिश की रिकॉर्डिंग, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूंगा. अक्टूबर में वी विल स्टार्ट टेस्ट सीरीज 4 year बैच इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. एंड का नहीं पता. Any other doubt? ठीक है, चाय पे चर्चा बाद में बता दूंगा. चाय पे चर्चा लाइक व्हाट वी आर हैविंग ए डिस्कशन अबाउट यूपीएससी स्ट्रेटजी ऑन 28, तो एट 4 PM. तो वी हैव डन लास्ट मंथ ऑल्सो, दिस मंथ ऑल्सो वी आर कंडक्टिंग वन सेशन अबाउट यूपीएससी स्ट्रेटजी. मुझे जो लग रहा है कि मेहनत करने के साथ साथ योर स्ट्रेटजी हैज टू बी करेक्ट. योर बिहेवियर, ज्यादा पंगा तो बिहेवियर का ही चल रहा है. Okay, fine. Are these 7 point clear? Okay. Any doubt? ठीक है, किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए जूम की? उसको कुछ नहीं मिलेगा फिर. एक्स्ट्रा क्लासेस वो भी जूम पे. रेगुलर तो लाइक विल बी ऑन पोर्टल फॉर ऑफलाइन. जो एक्स्ट्रा है कुछ, अच्छा ऑफलाइन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे ये है ना, अगर दिस इज गोइंग टू बी इन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, हमारा 3 महीने कोर्स है ना, अगर उसके बीच में होगी तो ऑफलाइन यू हैव टू कम हियर. ठीक है, मेरे वाले डाउट सेशन है ऑफलाइन, यू हैव टू कम हियर. ऑफलाइन स्टूडेंट्स ओनली, माय मेंटरशिप सेशन विल बी ऑन जूम. ठीक है, ये आपका ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन वालों के लिए जूम पे रहेगा. कंटेंट मुझे भी नहीं पता. हाँ जी, हाँ, yes, that will be your second layer. Actually CSAT program will go in around 3 layer. First layer basic and regular classes, you get a foundation about CSAT. Second layer with test series we have some extra learning. After test series you have to do self practice, where we provide you some extra question for practice, and we will have a regular doubt session in this. This is very important. Yes, this is around 1200 to 1500 questions. Theme based lecture along with test series, this is in the second layer. Theme based lecture we will take along with the test series. This is regular classes, this is first layer. Second layer is your test series plus theme based lecture. Third layer is your extra practice question, where you have to do self practice. CSAT is not about only classes. जो ये regular classes, this is only 25%. Rest 75%, like we are helping you with these mentorship features, your doubt sessions, extra classes, theme based lectures. हाँ जी, yes, we are planning the same.
मतलब हम क्या सोच रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट वी विल कंडक्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. आफ्टर दैट 8 फुल लेंथ टेस्ट हो गए. वी आर प्लानिंग एवरी मंथ देयर विल बी 2 टेस्ट फॉर यू, सो दैट यू विल बी इन टच विद CSAT. तो वी आर प्लानिंग कि जनवरी में 2 टेस्ट कर दें आपके फुल लेंथ, फरवरी में 2 कर दें, मार्च में 2 कर दें, अप्रैल में 2 कर दें, या मतलब लास्ट का 1 महीना छोड़ दो, उससे पहले पहले आपके टेस्ट कंडक्ट कराएं. बट देयर विल बी अ रेगुलर टेस्ट विद द फुल लेंथ टेस्ट. सेक्शनल टेस्ट हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके खत्म कर लें. दैट इज अवर प्लान. नहीं नहीं, कोई फ्लेक्सिबल नहीं है कि 2 बजे टेस्ट है आप 2:30 बजे आ रहे हो. वी विल गिव यू 2 or 3 ऑप्शन, लाइक इन अ वीक. अगर टेस्ट संडे को है तो वी प्रोवाइड यू स्लॉट ऑन सैटरडे, मंडे एज वेल जनरली. ठीक है, बट आवर स्टाफ को पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है. वी आर वेरी रूड एक्चुअली एंड वी हैव टू बी. 2:30 to 4:30 is your time slot for your test. You come at 3 o'clock, they are very humble. They will not stop you. Come. You come at 3:30, no issue. But at 4:30 exactly for full length test, they will take OMR from your side. That is a clear instruction to this staff. 4:30 पे आपसे OMR ले लेनी है हमने, clear cut. We are very strict about this. We are strict about the formation of questions also. It has to be strictly on UPSC pattern. It has to be 1 or 2 level difficult than what UPSC is doing in last year. जो 2024 का level है उससे 2 level difficult भी try करेंगे. We have maintained the level easy, moderate, difficult, mix रहेगा. There will be statement based question for sure. We try to match with UPSC, but we are coaching UPSC को उतना match नहीं कर पाते, but we try our best. And we will try our best also to make you cry in our test, so that you will be happy after UPSC prelims. वो हमारी जिम्मेवारी है. ठीक है, आपको यूपीएससी में इजी फील होगा. हम आपको इतने झटके दे देंगे टेस्ट सीरीज में, आफ्टर यूपीएससी पेपर यू विल फील यार ये तो ठीक है, ये सही था पेपर, रिलैक्स टाइम. फाइन, चलो कम टू द टॉपिक. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. I will ask the stuff. Now here number of rectangles. Okay, counting. ये टाइटल चेंज करना है, इसमें जीएमए लेक्चर 2 आ रहा है. क्लास होने के बाद ना जीएमए लेक्चर 1 कर देना इसको. Now here, first I tell you manual counting. I will give you short trick. We have to count rectangles here in this figure. Can we say this is rectangle number 1? But some students they say, sir, it is square. Okay, I'm not denying it is square, but it is rectangle as well. Every square is rectangle. Yes or no? जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होता ही होता है. दिस इज स्क्वायर बट इट इज रेक्टेंगल एज वेल. इसको रेक्टेंगल है ये. 1 2 3 4. Then this is like here 5 6. Then this is 7, this and 8, and the largest one is 9. In this given figure we have 9 rectangle, but imagine if it is very large figure, it will be time consuming. So same here, in case of rectangle, I take type 1. Type 1 is where number of column is equal to number of row. 2 by 2 figure, 3 by 3 figure, 4 by 4 figure, 5 by 5 figure, or if it is n by n figure. So what is our shortcut for number of rectangle? Bracket start 1 plus 2 plus 3 up to n. Bracket close. Into second bracket start 1 plus 2 plus 3 up to n. Sum of first n a natural number, multiply with sum of first n a natural number. Let me use it. इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इसमें 9 है तो we will check. It is 2 by 2 figure. So bracket start 1 plus 2, bracket close, into second bracket start 1 plus 2. So this is 3 into 3, 9,
in this given figure, how many rectangles? 9. You do manual counting or you use this formula. Formula is better because it is less time consuming. I take 2-3 examples so that you will be comfortable. Now here 1, 2, 3, 1, 2, 3. This given figure is 3 by 3 and we have to count how many rectangles are there. Bracket start 1 plus 2 plus 3 bracket close into second bracket start 1 plus 2 plus 3. This is 6 into 6, 36. क्या? पानी पी लो मैं. $36 rectangles. This given figure is 4 by 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So this is 4 by 4 figure. Bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4. Bracket close. Second bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4. So this is 10 into 10, 100. So in this given figure, how many rectangles are there? 100. All of you? Fine. Now you try. I ask you 2 questions. If any one of you want to do manual counting, you can do. You are free. That is your fundamental right. How many rectangles are there in the given figure? Sir, done? All of you? So this given figure is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So this given figure is 5 by 5. So what we will do, bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 bracket close. Second bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 3, 6, 10, 15 into 15, 225. And believe me, if you do manual counting, it takes more than 10 minutes and I guarantee in the first go, you will not get 225. या तो कुछ rectangle miss हो जाएंगे, कुछ double counting होगी. So this short trick is better for bigger figure, yes. Try one more question. In this given figure, how many rectangles are there? As a category 3 student, my request to you, keep your answer with yourself always. Why? Because there are 2 reasons behind this. One thing is when category 3 student give the answer, category 1 उनको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे भस्म कर देंगे. और दूसरा रीजन मे बी टू इम्प्रेस समवन यू गिव द आंसर. और गलती से गलत आंसर हो गया ना, सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा. आपको बचाना चाह रहा हूं. और जिसको इंप्रेस करने चाह रहे हो वो ऑलरेडी इंप्रेस्ड है.
तो कीप योर आंसर विद योरसेल्फ। फिर ये मत कहना गोलकीपर होते हुए भी गोल हो जाता है। चलो जी 6/6, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. So this is 21 into 21. What is your answer? 441. So in this given figure, how many rectangles are there? 440. Now type 2. Type 1 is where number of column is equal to number of row. Type 2 is where number of column is not equal to number of row. जैसे 6/4 figure. It can be 3/7 figure. It can be 2/8 figure. It can be 3/4 figure, where number of column is not equal to number of row. I tell you, it is very easy. Let us revise type 1. Type 1 figure is when it is n by n, where number of column n, number of row n, bracket start 1 + 2 + 3 + 4 up to n into second bracket start 1 + 2 + 3 up to n. What is type 2 where number of column is not equal to number of row? Our type 2 is n by m figure, where number of column n, number of row m. Here it is n into n, so bracket start up to n. Here n into m, so here first bracket start 1 + 2 + 3 up to n. Same sum of first n natural number into second bracket start 1 + 2 + 3 up to m. Since it is n into m, sum of first n natural number multiply with sum of first m natural number. Let me solve two questions for you. This given question is 6/4. If we have to manage how many rectangles are there in the given figure, bracket start 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 bracket close into second bracket start 1 + 2 + 3 + 4. So it is 3, 6, 10, 15, 21 into 10. So it is 210 number of rectangles are there in this given figure. Let me try one more question. I will solve for you, then I ask you one question. So now here 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. This is 5/3 figure. So what we will do, bracket start 1 + 2 + 3 + 4 + 5 into second bracket start 1 + 2 + 3. Because this given figure is 5/3. So now here it is 3, 6, 10, 15, 15 into 6, 90. So how many rectangles are there in the given figure? 90. Okay, I ask you one question, try. Take time, keep answer with yourself. In this given figure, see how many rectangles are there. For that grouping, we will make 6 grouping. Don't make the request कि मेरा friend उस ग्रुप में तो मुझे भी उस ग्रुप में डालो, क्योंकि अब ये स्कूल वाला सिस्टम नहीं चलेगा। जिसको जो ग्रुप मिल गया मिल गया।
What is your answer? Here this is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. So this given figure is 5 by 4. So now here bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Second bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4. This is 3, 6, 10, 15 into 10, 150. I think all of you got answer 150. All of you become master. Madam as well. But after 2 months, master will become madam, madam will become master. क्या होगा? You will mix the formula. So that you have to be careful. Formula mix हो जाएंगे आपके. So we revise square. If it is n by n figure, it is n into n. Square में square से ही start होता है, n into n जैसे. Plus n minus 1 into n minus 1 and so. Whereas in rectangle, if it is n by n figure, bracket start 1 plus 2 plus 3 up to n into second bracket start 1 plus 2 plus 3 up to n. Fine. Achha, like one common doubt. No one in this batch has asked, but earlier, like last year, in all the batches, किसी ना किसी ने वो doubt पूछा. What is that doubt? It is 1 2 3 1 2 3. This is 3 by 3 figure. We have to find number of rectangle. And I told you shortcut is 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. And what is this? Sum of first n a natural number. The student asked me, sir, can we use that formula n into n plus 1 divided by 2? Yes, you can use. बट मच्छर मारने के लिए AK-47 नहीं निकाली जाती. फॉर्मूला यूज करने में टाइम लगता है. अगर ये 1 plus 2 plus 3 में पहले ये लिखोगे निकालोगे 15 सेकंड तो वैसे ही एक्स्ट्रा लग जाएगी. तो फॉर स्मॉल वैल्यू फॉर्मूला इज नॉट हेल्पफुल. फॉर्मूला हेल्पफुल होता है अगर 20 कॉलम और 20 रो होते. If there is a question having 20 column and 20 row, then don't add manually. There you use formula. Yes, you can use formula. I'm not denying. But इस वैल्यू के लिए कहाँ फॉर्मूला निकालते फिर होंगे? Directly what is 1 plus 2 plus 3? 6 into 6, 36. Because formula required some time. Formula का कुछ ना कुछ time लगता है. So for small calculation we never use formula. For big calculation you have to use formula. कर सकते हो. बट इसके लिए नहीं. इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर्मूला बुरा मान जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज नॉट एवरीवेयर यू हैव टू यूज फॉर्मूला. यू हैव टू डिसाइड द पर्पस ऑफ फॉर्मूला टू सेव टाइम रादर देन वेस्टिंग टाइम. यहां टाइम वेस्ट करेगा फॉर्मूला. नाउ नेक्स्ट, पैरेललोग्राम. चलो पहले पैरेललोग्राम. दिस इज लाइक फॉर पैरेललोग्राम. दो पैरेलल लाइन लिख देना, नहीं तो पैरेललोग्राम यू कैन राइट द पैरेललोग्राम. ओके, सो आई टेल यू हाउ वी कैन काउंट पैरेललोग्राम इन द गिवन फिगर. अच्छा, एनी वन ऑफ यू डोंट नो पैरेललोग्राम? रेक्टेंगल यू नो, दिस इज रेक्टेंगल. बस इसको टेढ़ा कर दो थोड़ा सा. दिस इज पैरेलल. व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल. पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल और बराबर होती है. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड इक्वल. दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. Okay. So now here in the given figure, how we will count the parallelogram? I will not give you new formula because rectangle and parallelogram there is a difference of angle, the rest is same. Rectangle को थोड़ा घुमा दो तो parallelogram बनता है. So here idea is the short trick we have learned for rectangle
is applicable for parallelogram. जैसे इसमें है, if you have to check parallelogram and here you have to check rectangle. This is 1, 2, 3, 4. This is one parallelogram, second, third, fourth. Again, this is 5, this is 5. 6, this is 6. This is 7, this is 7, this is 8, this is 8, and the larger one is 9. So here we have the same formula what we have learned for rectangle will help you for parallelogram. In case of parallelogram, we will not say column and row, but we can say type 1 figure in parallelogram when it is n by n figure. Like this is 3 by 3 figure. Okay, so no need to do manual counting. This is we call 3 by 3 figure. If it is n by n figure, our shortcut is rectangle का क्या था? Bracket start 1 plus 2 plus 3 up to n into second bracket start 1 plus 2 plus 3 up to n. Value of n be 1, 2, 3, 4, 5 depend on the question. This given figure is 3 by 3. So how we will count number of parallelogram? Bracket start 1 plus 2 plus 3 into second bracket start 1 plus 2 plus 3. So this is 6 into 6, 36. In this given figure, we have 36 parallelogram. Like take your time. यहाँ पे ना एक PYQ की बुक थी, CSAT PYQ की, वो चाहिए. In the given figure, take your time, check how many parallelograms are there. It is like 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Can we say it is 4 by 4 figure? So what you do, bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4 into second bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4. This is 10 into 10, 100. So how many parallelograms are there in the given figure? 100. Same here, if it is not n by n figure, it is n by m. So I write here parallelogram, our type 1, if it is n by n figure, bracket start 1 plus 2 plus 3 up to n into second bracket start 1 plus 2 plus 3 up to. Type 2, if it is n by m figure, we have the same shortcut what we have learned for rectangle, no new formula. तो क्या था 1 plus 2 plus 3 up to n into second bracket start 1 plus 2 plus 3 up to m. I just solve one question for you, one I will ask you. Like can we say this given figure here is 4 by 3? So what we will do, bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4 into second bracket start 1 plus 2 plus 3, 3, 6, 10 into 6, 60. So in this given figure, we have 60 parallelogram. Do you remember rectangle parallelogram counting? We have the same short trick. Try one question. Take time, keep answer with yourself, see how many parallelograms are there in the given figure. What is your answer? 90. 1, 2, 3, 4, 5. So this given figure is 5 by 3.
rectangle formula, bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, second bracket start 1 plus 2 plus 3, 3 6 10 15 into 6 90. So in this given figure we have 90 parallelogram. Any doubt? Okay, we are more happy when the same formula help for 2-3 things. एक अच्छी खुशी महसूस होती है. ठीक है, रोम्बस. तो क्यों चैट देख रहे हो जोशी? क्या क्वेश्चन लिखने से पहले ऑनलाइन वालों के आंसर आ रहे हैं? मेरे पे ध्यान दो, कमेंट पे क्यों ध्यान दे रहे हो तुम? पैसे किसके लिए दिए, कमेंट के लिए, मेरे लिए? चलो, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट रोम्बस? ठीक है, स्क्वेयर इज लाइक बर्फी, रोम्बस इज लाइक काजू कतली. क्लियर? बर्फी, काजू कतली. It is square. I tell you. What are the feature of squares? Opposite side parallel equal, each angle 90 degree, all four sides are equal. Here also opposite sides parallel equal, here also all four sides are equal, only the difference of angle. Here angle 90 degree, here angle will be other than 90 degree. बस स्क्वायर को टेढ़ा कर दो तो रोम्बस बन जाएगा. इन स्क्वायर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, इवन इन रोम्बस आल्सो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. मतलब इट्स लाइक ए पैरेललोग्राम वेयर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड रोम्बस. नाउ इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? अगर नहीं क्लियर, कल 1 kg काजू कतली ला सकते हो आप क्लास में. वी ऑल विल हैव. ठीक है, देन आई विल टेल यू प्रैक्टिकली व्हाट इज द शेप ऑफ रोम्बस. अरे इतना ज्यादा आगे नहीं जाने का हमने अभी. ठीक है, अभी ABCD चल रही है, ईडियम फ्रेजेस की बात नहीं करने का है. ओके, all four sides are equal. Square and rhombus, what is the difference? Angle 90 degree. Here angle is not 90 degree. That's why for rhombus I will not give you any new formula. The formula we have learned for square will help. We revise square formula. If it is n by n figure, so it is n into n plus n minus 1 into n minus 1 and so. That is for square. But if we have a figure where number of rhombus are asked, how many rhombus are there? If you check manually, in this figure, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this larger one is 5. So here, this given figure is 2 by 2. So here we have the same formula what we have learned for square for number of rhombus. What you have to do, you have to start with the given number 2 into 2, subtract 1 1, 1 into 1 plus 0 into 0. So this is 4 plus 1 5. In this given figure we have 5 rhombus, 4 small and 1 large. It will be mentioned in the question. There is a doubt of online student how to identify square or rectangle. It is the duty of the examiner. उसको भी question बनाने के पैसे मिल रहे हैं ना. So it is their duty to explain clearly in the question कि whether they are looking for rectangle or they are looking for square. वो clearly पूछेगा कि number of squares in the given figure or number of rectangles in the given figure. तो ये examiner का काम है. Don't worry about this.
Now here I take one more question for number of rhombus. This given figure is 3 by 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So if it is 3 by 3 figure, our formula is 3 into 3 plus 2 into 2 plus 1 into 1 plus 0 into 0. So it is 9 plus 4 plus 1. So your answer is 40. In this given figure, how many rhombus are there? 40. You try one question. In the given figure, see how many rhombus are there. ज्यादा एन के चक्कर में मत पड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल चीज याद करो, क्या फिगर है 4/4 ना, इसको घटाते जाओ। 3/3, 3/3 से कम क्या होगा? 2/2 नहीं, 3/3 के बाद 2/2 इंटू 2, फिर क्या होगा? 1 into 1, 0 into 0। अच्छा, इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट योर कैटेगरी, like between category 1 and 2, category 2 and 3, prefer the lesser number। आपको लग रहा है ना कि आप 2 और 3 में हो, आप 2 में हो, आपको लगे कि 1 और 2 में, तो आप 1 में हो। ठीक है, बाकी हम डिसाइड कर ही लेंगे अगले हफ्ते तक। अच्छा, व्हाट वी हैव ए डिस्कशन विद द टीम कि जैसे हमें ग्रुप बनाने हैं फॉर दैट, फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट। ऑफलाइन का तो यही टेस्ट ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए वी विल कीप द पोर्टल ऑन फॉर 24 आवर और 48 आवर। तो एक सजेशन आया टीम मेंबर का कि कोई स्टूडेंट पहले, सारे क्वेश्चन तो सामने होंगे, पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देगा, फिर टेस्ट देगा। वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा इफ you are category 1 and you behave like category 3, this will be disaster for you। आप उनके साथ दौड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, चीटिंग नहीं करने की है, आपके साथ चीटिंग हो जाएगी, फिर हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने का। 4/4 जो चीटिंग करता है वो अगले साल फिर आता है, क्योंकि यूपीएससी में तो नहीं कर पाओगे आप। बस टेस्ट में चीटिंग नहीं करने का है। 4 into 4 plus 3 into 3 plus 2 into 2 plus 1 into 1. This is 16 plus 9 plus 4 plus 1. So here we have 30 rhombus in the given figure. Type 2 for rhombus if it is n by m figure. N by m. Same thing what we have learned for square. What is the shortcut for n by m figure? N into m plus n minus 1 into m minus 1 plus n minus 2 into m minus 2, and I solve one question for you and one I will ask you. What is this given figure? 4/3. So we start with the same number, 4 into 3 plus, एक एक कम कर दो, 4 will become 3, 3 will become 2. Same like square, plus 2 into 1 plus 1 into 0. So now here this is 12 plus 6
plus 2 plus 0. So here your answer is 20. In this given figure, how many rhombus are there? 20. Fine. 22 near 20. Next question. You try. Given figure, how many rhombus are there? And keep your answer with yourself. Done? What is your answer? अच्छा 10 के पे ध्यान है अभी. यूपीआई कर देंगे भाई, यूपीआई कर देंगे, चिंता मत करो. बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. 10,000 है, 15 लाख नहीं आ जाएंगे. What is the given figure? 6/3. So how many rhombus are there? WhatsApp के लो भाई. एक रूल समझ लो. Only the last row people they can play WhatsApp. बगल वाला स्माइली देख गया तुम्हारी. अब लास्ट वालों के लिए हमने कैमरा लगा रखा है. ये क्लास में WhatsApp नहीं खेलने का. 6 into 3 plus 5 into 2 plus 4 into 1 3 into 0. So 18 plus 10 plus 4 32. Fine. Any doubt? All of you. Even category 1 also. Online students. हाँ सारे आंसर सही आ रहे हैं तो इसमें कुछ झोल है. बताता हूँ क्या. See here, UPSC from last 4-5 years, have you observed one thing? I noticed, maybe my observation is correct or wrong. From last 3-4 years, UPSC is not asking any question where diagram is involved. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा सीसेट में जिसमें डायग्राम है. Because we have one category of student visually impaired. Okay, they appear for the exam. सही वाले visually impaired ना. The people those who are actual visually impaired. I will translate. You know the context? Those who are actually visually impaired. Not like OD wale. That is my concern. So here, what they get, they face problem. See what they get. They like that is allowed. They can carry one assistant, one person who is like simple graduate, not technical degree, to help them. They read the question, they dictate them, they solve, they tell the answer to that person, and they mark the OM. That is the process. And tell me how to dictate this table question,
how to dictate question where diagram is involved. So maybe they might have complained in UPSC, so they stop asking question where pictures are involved, diagrams are involved, because of that category of student. Okay, they are not asking. And what visually impaired student they get, I tell you, per hour they get, I think, 20 minutes extra. For you people, there will be 2 hours, they will get 2 hours 40 minutes, and which is justified. If I ask you to put, you are blindfolded and I dictate question for you, you need more time actually. So they are getting 40 minutes extra for the paper because they are visually impaired. Fine. So here UPSC will not give diagram. There are 2 reasons why. One is visually impaired, second is our examiner is also lazy. अपने examiner को diagram बनाने नहीं बनता है. Not will draw the diagram, will use the language. Our UPSC examiner, they are very good about the language. They will not give diagram. It doesn't mean they will not ask question. They are asking the question from the same topic, but without diagram. Because UPSC have very good command over language, they can convert any question in the language. They can ask any question without diagram. So now we will discuss on this, but this basic is for that type of question, this has to be clear. Clear? Square, rectangle, parallelogram, rhombus. Triangle I will discuss tomorrow. Now here, our question is, there are 5 vertical lines and 5 horizontal lines in a plane. एक plane में 5 vertical और 5 horizontal line है. That type of question we have. They will not draw the diagram. They will say there are 5 horizontal and 5 vertical line in a plane. Find maximum number of squares. Be careful, I ask squares. Can be formed by using 5 vertical and 5 horizontal lines. We have this type of question. There are 5 vertical and 5 horizontal lines. Find maximum number of squares can be formed by using 5 vertical and 5 horizontal lines. Acha, try. First you try. सर थोड़ा फास्ट चला करो. हाँ, किसी और के लिए नोट्स बना रहे हो क्या? अरे फास्ट बनाओ फटाफट. What is your answer? Those who have done 30, 55, 91. किसी का 91 भी आया? 26. अलग ही अतरंगी आंसर है तुम्हारा. 26. 100 का आया किसका? 100 to 25. हाँ, रेक्टेंगल कर लिया ना आपने गलती से. इफ यू काउंट बाय मिस्टेक रेक्टेंगल, यू गेट 100 और 225. अच्छा, टेल यू. Just draw 3 vertical and 3 horizontal line. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tell me, are you getting 3 by 3 figure or 2 by 2? 2 by 2. Just draw 5 vertical, 5 horizontal line. It will take 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. When you draw 5 vertical and 5 horizontal line, we will not get 5 by 5 figure, we get 4 by 4. जो फिगर बनेगी वो बनेगी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So figure will be 4 by 4. Then you use formula. What is our formula for number of square? 4 into 4 plus 3 into 3 plus 2 into 2 plus 1 into 1. It is 16 plus 9 plus 4 plus 1. So here 30 is your answer. When number of lines are given, figure will be 1 less. 5 vertical, 5 horizontal line will not give you 5 by 5 figure. It gives you 4 by 4 figure. Now you try one question. Find maximum number of rectangle
can be formed by using 6 vertical and 6 horizontal lines. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. रेक्टेंगल, 6 vertical and 6 horizontal line. If you know the concept, okay. Otherwise draw 6 vertical 6 horizontal line draw करके देख लो. Number of rectangle can be formed by using 6 vertical and 6 horizontal line. ये हर बार ये क्यों लिख रहे हो? n इंटू एन किसी और के लिए नोट्स बना रहे हैं. सीधा 5/5 है. हाँ करो अब. ये n इंटू एन बार बार नहीं लिखने का नोट्स में. चलो आगे. भाई साहब साइकिल से नहीं गिरोगे, मैं हूँ पीछे खड़ा हूँ आपसे. बिंदा साइकिल चलाओ आप. प्लस 4 इंटू 4 प्लस बट क्वेश्चन रेक्टेंगल का था. रेक्टेंगल का है. ब्रैकेट स्टार्ट वाला होगा. So now here 6 vertical and 6 horizontal line. So figure will be 5/5. Directly you can say. No need to draw. When number of lines are given and we have to make a figure, it will be 1 less. 5/5. Rectangle formula is bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Second bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. This is 3, 6, 10, 15 into 15, 220. Be careful. Formula कौन सा यूज करना है? When number of lines are given, it will be 1 less. Is this clear? चेक कर लेना. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So given figure will not be 6/6. It will be 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5/5. I ask you one more question. Take time. Be careful. Find number of rectangle can be formed. Rectangle I ask by using 5 vertical and 7 horizontal lines. 5 vertical and 7 horizontal lines. Done. Achha, there is one homework. You have to remember one more table. 1, 1 plus 2, 3. 1 plus 2 plus 3, 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4, 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 15. It's like sum of first n natural number where it changes from 1 to 10. सिर्फ 10 तक चलने का. फिर 1 से लेके 6 तक का टोटल लेना है. 1 to 7, 1 to 8, 1 to 9, 1 to 10. And you have to remember it. Sum of first 5 natural number, sum of first 6 natural number,
Some of us 7 natural number, some of us 8 natural number, some of us 9 natural number, some of us 10 natural number has to be on your tips. Will be useful, जैसे अभी use हो रहा है. It will be useful in number series topic. It will be useful in other topic also. It is useful. ये table रट लोगे ज़्यादा better आएगा. अच्छा, question. 5 vertical and 7 horizontal line means figure will be 4 by 6. And what is our question? Number of rectangle. If it is 4 by 6 figure, bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4. Second bracket start 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. So this is 10 into 21, 210. So total number of rectangle here 210. Okay, I ask you one previous year question, then we will have test. I write on the board. This question asked in 2019, the number of parallelogram that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines is answer option A, B, C, D, 18, 24, 32, 36. Okay. Fine. So here 4 parallel line intersecting another set of 4 parallel line. So this figure will be 3 by 3, or you can check 1, 2, 3, 4. Another set of 4 parallel line 1, 2, 3, 4. So this given figure is 3 by 3 and it is asked number of parallelogram. I told you rectangle parallelogram, we have same formula. Parallelogram bracket start 1 plus 2 plus 3. Second bracket start 1 plus 2 plus 3. So it is 6 into 6, 36. So our answer here is D. Okay. Now we will have test on this GMA topic. Triangle I will cover tomorrow. Number of triangles counting we will cover tomorrow. क्या होगा 5 और 6 और 1 कम होना. हाँ, नंबर ऑफ लाइन से तो एक एक कम होता है हमेशा. टेस्ट देना है 4 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल लाइन तो 3 by 2. Like here, if I say there are 10 vertical line and 10 horizontal line, जो फिगर बनेगी वो 9 by 9. इसमें से भी एक कम कर दो, इसमें से भी एक कम कर दो. That is a fixed rule. When you have parallel lines and you make a figure out of that, one less होके बन जाता है. You can directly say or you can check also by drawing the line. But line check करके draw करने की जरूरत नहीं है, मैं कर चुका हूँ already.
एक्स्ट्रा पेपर ले लेना. All of you got the test paper? Okay, online student, we have uploaded the test on the portal. Okay, बट जूम करने से सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं दिखेंगे, तो पहले 1 2 5 6 कर लेना, फिर बाकी बात लेना.
20 बोर्ड पे हो गया। बस अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज 30. Question number 2 answer is 100. Question number 3 answer C 15. Question number 4 answer B 18. Question number 5 answer C 8. Question number 6, 7 I will discuss. Question number 6 answer C 24. Question number 7 answer A 20. For practice, I will share some extra question on Telegram in night, so you can practice that question. Let me discuss 6 and 7 first, then 3. Okay. If any other doubt, you can ask later. First, I tell you 3 only. Chalo. 3 में पूछ रहा है count the number of squares in the given figure. See here, first you check this small. We have 5. Acha, I tell you one thing. If there is a box, inside that box there is a plus. If there is a box and inside that box there is a plus, that have 5 square, 9 rectangle. Because it is 2 by 2 figure. In a box, we have a plus like this. It means it is 2 by 2 figure. 2 by 2 figure means 5 square. So this blue have 5 square. Blue वाले तो 5 हो गए. This middle size, here also we have 5. Then this size also we have 5. So 5 plus 5 plus 5, we have 15 square. Now next is question number 6. Count the number of square in the given figure. You divide this question in 2 parts. One are horizontal vertical line. Second is this type of line. पहले ये देखो blue color. This is 4 by 2 figure. 1, 2, 3, 4, 4 by 2. So it is 4 by 2 figure. 4 into 2 plus 3 into 1, 8 plus 3, 11. Many students, they mark 11 because they thought only these are square in this figure. So these are 11, okay. Then next is, you have to see this part. This is 2 by 2 figure. 2 by 2 figure give how many squares? 5. You have to give me 2 minutes. I will explain. Then I take this green part. That also have 5. Then I take this blue part here, this one. That also have 5. But there is overlapping. This square you have counted in red as well as green. This square we have counted in blue as well as green. So minus 2. Because there are 2 square which we have done double counting. So it is 11 plus 15, 26 minus 2, 24. So here how many squares are there? 24. I repeat, step number 1, you see this straight lines, vertical and horizontal. This is 4 by 2 figure. It is very easy. 4 into 2 plus 3 into 1, 8 plus 3, 11. Then what you have to do, you have to focus on this part. This is 2 by 2, which give you 5 squares. Then similarly, this green part, overlapping we will treat later, that give 5 square. Similarly here, this blue part, 2 by 2 figure, that also give you 5 square. But here, these 2 squares, we have done double counting. So we have to do adjustment minus 2, 11 plus 15, 26 minus 2, 24.
You break question in part. That will help you. Now next here, this is count the number of rectangle in the given figure. Here, first this green figure, या इसको मैं blue color use करूँ. First this blue color figure. Question is number of rectangle. Can we say it is 2 by 2 figure? This blue color. And 2 by 2 what we have? 1 plus 2 into 1 plus 2, 9. These are 9 rectangles. Is this clear? Then you see this red part. Only the red. This is called 3 by 1 figure because there are 3 column and 1 row. 3 by 1. And what is 3 by 1? Bracket start 1 plus 2 plus 3 into 1. So it is 6 into 1, 6. This red color give you 6 rectangle. I tell you how come. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 separately, 2 separately, 3 separately. 1 and 2 together is a larger rectangle. 2 plus 3 is also a larger rectangle. 1 plus 2 plus 3 is the largest rectangle. तो यहाँ पे 6 rectangle है लाल कलर वाले. Are you able to see 6 rectangle? 1, 2, 3, 1 plus 2, 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3. Now here, I take blue color here, this. This is also 3 by 1 figure. This also give you 6 rectangle. 9 plus 6, 15 plus 6, 21. But there is a catch. This part is common in the red as well as blue. So here there is one rectangle which we have done double count, -1. ये overlapping वाला सबसे लास्ट में. These are miscellaneous question where we have figure on figure. Figure के ऊपर figure चिपकाई हुई है जैसे 9 plus 6, 15 plus 6, 21 minus 1, 20. So how many rectangles are there in the given figure? We have 20. Camera किसने लाया? Okay. I have taken this. I have taken blue. This rectangle I have counted here also, here also. तो ये वाला रेक्टेंगल इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी हो रहा है. तो दिस मिडल वन इज योर ओवरलैप. Okay, fine. Tomorrow we will do triangles. Today around 10 p.m. I will share one handout on Telegram for extra practice question on this topic. Okay. Those who are not having any doubt, you can skip the class. You can leave the class. Those who are having still doubt in this question, you can wait. किसी का कोई और डाउट बचे तो आप वेट कर सकते. लाइक 5 ऑनलाइन वालों का देख लेता हूं. I will explain 6 again. 5th I will take. Question number 5 I will take. 6 I will explain later. Wait. Here in the adjoining figure, if the center of all the circle are joined by horizontal and vertical line, find the number of squares that can be formed. You have to join the center by horizontal and vertical line only. If you join the center by horizontal and vertical line, so your figure will be 3 by 2. And in 3 by 2 figure, number of squares 3 into 2 plus 2 into 1, it is 6 plus 2, 8. We have 8 squares in the given figure. Question number 5. Okay, 6 and 7 again I will explain. उसके अलावा So ये question है the cost of an article increased by 20% and 30%. सर इसमें से कोई ये वाला मेथड लगाएंगे. सर मुझे इसमें ये कंफ्यूजन था, नीचे जो डिफरेंस अपॉन रेफरेंस है, रेफरेंस में 120 लेना है या फिर 100. नहीं, जब पीसेस यूज कर रहे हो 84 और 100 में क्या डिफरेंस है?
आप कंफ्यूज कर करो, रेफरेंस तो जब लेते हैं जब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पूछ रहा है। ये तो टाइप 2 क्वेश्चन है। टाइप 2 में 84 इज मोर देन और लेस, लेस हाउ मच, लेस 16%, सो देयर इज अ 16% डिक्रीज इन द प्राइस। अभी कहाँ किया नंबर सिस्टम, आप कुछ एडवांस पूछोगे फिर कहाँ पर कर पाएंगे, मतलब जो हम कर चुके उनसे है क्या? ये एपी का क्वेश्चन है, हाँ ये नंबर सिस्टम का है ही नहीं। ये एपी भी नहीं, ये एलसीएम प्लस वेन डायग्राम, ये तो बड़ा एडवांस क्वेश्चन है। ये वाले का ठीक है, डिवाइड वाला तो हमने परसेंटेज में पढ़ा, नंबर सिस्टम में कहाँ पढ़ा? एडवांस। हाँ वेट करो, अभी तो नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं हुआ। आपने परसेंटेज वाले भेजे हैं क्वेश्चंस, वो एनसीईआरटी वाला, वो होमवर्क वाली कॉपी पे करना है सिर्फ कैटेगरी 1 वालों को, हाँ होमवर्क वाली पे। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6 and 7 I explain again. I take question number 6. ध्यान से सुन लो कैटेगरी 1 स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप। पहले इस फिगर को ऐसे देखो, हाउ टू नेम 1 2 3 4 2, 4 by 2। स्क्वेयर्स कैसे होता है, 4 into 2 plus 3 into 1, 8 plus 3 11, but it is not the complete figure, we have some extra squares here, it is not a single figure, फिगर के अंदर फिगर है। तो अब ये वाला पार्ट देखोगे, इट इज 2 by 2, 2 by 2 गिव यू 5 स्क्वायर। कैसे, 2 by 2 में क्या होता है, 2 into 2 plus 1 into 4 plus 1 5, so red color we have 5 square, 1 2 3 4 bigger one 5। I use black color next के लिए। This is also 2 by 2 figure, we have 5 square, 1 2 3 4 5 सारे कर लो, ओवरलैपिंग बाद में देखेंगे। After that we take blue color, this is also 2 by 2 figure, here also we have 5, so we should have 11 plus 15 26, but this figure you have counted twice, इसको रेड कलर में ब्लैक कलर दोनों में किया। This figure you have counted twice in black as well as blue, so there are two figure you have counted twice, so -2, correct answer is 24। Similarly question number 7, क्वेश्चन नंबर 7 वी डिवाइड इन 3 पार्ट, इस फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले जो सिंपल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मेक इट ए रूल व्हेन देयर इज अ मिसलेनियस क्वेश्चन, फर्स्ट टारगेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, सो दीज आर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, दिस इज 2 by 2 figure and it is number of rectangle asked in 2 by 2 figure, bracket start 1 plus 2, second bracket start 1 plus 2, 3 into 3 9, but it is not a complete answer because we have some extra figure attached to it. Next part is this red color part, this is 3 by 1 figure, 1 2 3 1, 3 by 1 figure बोलते हैं इसको। ये figure जो है ये 3 by 1 figure है, 1 2 3 1। So in 3 by 1 figure, how many rectangles are there? 1 plus 2 plus 3 into 1, 6 into 1 6, ये लाल कलर में 6 रेक्टेंगल है। Then there is one more part left, अभी भी पूरा नहीं हुआ। This black color part, if you see, this is also 3 by 1, it also have 6, but there is a problem, this red and black, ये red में भी आ रहा है, black में भी आ रहा है। This is the rectangle, by mistake you have done double counting, तो 9 plus 6 15 plus 21 minus 120, तो overlapping, that is your third step। Step 1 you focus on horizontal vertical line, step 2 see the remaining part, step 3 if there is a overlapping which you have done double counting, you make a adjustment, और largest number available 20, तो you have to mark 20। आप 21 मार्क भी नहीं कर सकते ना, there is no answer option available। सर ये फिफ्थ वाले में सबसे ज्यादा डाउट है, ये फिफ्थ के आपने सेंटर मिलाने पहले तो, सॉरी पहले in the adjoining figure if the center of all the circle are joined by horizontal and vertical line, तो यहाँ horizontal line clear, यहाँ ऐसे, तो फिर पहले ड्रॉ करो। सर ये मैंने ड्रॉ किया था, इसको छोड़ो, यहाँ ड्रॉ करो, इसके सेंटर मिलाओ। टेस्ट आपका 10 कब होगा? हाँ वो सरप्राइज टेस्ट है। मेरी सर ट्यूसडे को क्लास होती है, तो फिर उस दिन मैं ऑनलाइन लगाऊंगी। तो ऑनलाइन दे लेना टेस्ट, आपका हाइब्रिड है ना,
हाँ तो ऑनलाइन दे लेना टेस्ट। हो गया सर। क्या आ गया ये? इसमें कितने बॉक्स बने? 1 2 3 2। हाँ। तो ये 3/2 है। हाँ। तो ये तो हो गया 6 + 2 नहीं वो तो समझ गया मैं, लेकिन मेरे को ये चीज पूछनी, जब हम स्क्वायर का कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कितना बताया था कि 4 है तो 3 ले लेंगे, फिर 2 है तो वो तो लाइन में next लेंगे वाली ना। लाइन से लेंगे ना। जब नंबर ऑफ लाइंस दी होती है तब। ये तो फिगर ऑलरेडी बन गई ना। अच्छा नंबर ऑफ लाइन दी होती है तब एक एक लेस करते हैं। अच्छा ठीक है। और अगर नहीं दे फिगर रहा बन गई तो फिर तो एज इट इज यूज करेंगे ना, फिर 1 1 लेस क्यों करेंगे? तो ठीक है। थैंक यू सर। टेबल बनानी है, यू हैव टू मेक टेबल। ड्रॉ द टेबल, आई विल हेल्प यू, जस्ट हैव सिर्फ इट। परसेंटेज वाले में डाउट था, इसमें बाय ऑप्शन कैसे करना भाई 8 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 8 होता तो मेरा 50% रिजल्ट होता। 10 को ट्राई करो। अब मान लो 10 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन का 1 नंबर, 10 नंबर। उसमें से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हर क्वेश्चन में आधा आधा नंबर, 4 नंबर आ गए। क्या 4 10 का 40% है? हाँ है। तो फिट बैठ गया। है? ये वाले पैटर्न वाले सवाल ही बन रहे थे। तो आपने परसेंटेज की दोनों तीनों क्लास की है? सब दो क्या था, एक मिस हो बेसिक जो सबसे पहली क्लास थी वो की थी, जिसमें मैंने टेबल डिस्कस की थी। आपका हाइब्रिड है ना? हाँ जी, एक्सेस मिल गया? गया। हाँ आप वो एक बार देख लो, क्योंकि पूरा लेक्चर है उसमें मैंने पूरा बेसिक बनाया परसेंटेज का। यस स्टिल देयर विल बी डाउट, मैं संडे को डाउट सेशन लूंगा अब, लेकिन वो जरूर देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सब बाकी हो रहे थे, बस ये मिस हो वो आप क्लास देख लो, हो जाएगा। ठीक है ठीक है, फिर भी इशू आए पूछ लो। सर। और एक हाँ बात पूछना था, आपने बोला था कि बार बार प्रीलिम्स फेल होते हैं तो कुछ बिहेवियर पैटर्न की वजह से जिसमें प्रॉब्लम होते हैं, तो वो क्या है? पैच वर्क करते हैं, चीजों से भागते हैं, माइंड कहता है कि अब ये सब्जेक्ट छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, इसमें मैंने 8 9 सर रीजन बताए। पहले 25 आया था, इस बार जीएस में 105 आया, सीसेट में कुछ ज्यादा ही गंदा हुआ याद आया है। सर जीएस में 105 है ना, कोई ना, सीसेट हो जाएगा। सर बस 40 आया था। एक बार 2024 का पेपर नेक्स्ट क्लास में, कल मेरे को अपना 2024 का पेपर दिखाना जो आपने एक्चुअल पेपर है, ठीक है मैं उसका एनालिसिस करूंगा। ठीक है। ये 9th वाला सर एक बार बता दीजिए। हाँ, ये 9th वाला पीसीसी का टाइप 2 है। इन वन ऑफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%, अदर इज इंक्रीज बाय 5%। ठीक है, 100 20% इंक्रीज प्लस 20 बिकम 120, 5% इंक्रीज। यू हैव टू कैलकुलेट 5% ऑफ 120। 5/100 इंटू 120 कर लो। ठीक है, या इसका 10% होता है 12, 5% हो जाएगा 6। ठीक है, तो प्लस 6 126। 126 इज मोर देन 100 और लेस? मोर कितना? आंसर आ गया। सर मैंने इसके अंदर गलती कर रहा हूँ, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर देखो हमें 20% लेस करना था, है ना, तो फिर मैं 20% लेस करके इसके अंदर देखना क्या प्रॉब्लम कर रहा हूँ, ये इसलिए मैंने क्योंकि 10 20 देखो ये टाइप 1 है, 100 पे स्टार्ट हो रहे तो 100 पे खत्म होना है। अच्छा, बस ये ये 100 लिखो। 125 से 100 तक कितना होगा? 20% डिक्रीज। 20% डिक्रीज होगा, क्योंकि 25% डिक्रीज 20% डिक्रीज होता है। सर फिर एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड, आपने क्लास की थी कल? तो मैंने जैसे टेबल बनाई थी वैसे बनाओ ना, प्रॉपर, है ना? तो सर 20% आराम से बनाओ, लिखिए उसमें। सर 20% डिक्रीज आ गया तो फिर वो- 20 125 का 20 25 ही होता है, 100 आ जाएगा। नहीं 25% इंक्रीज कंपनसेटेड बाय 20% डिक्रीज, सीधा आंसर है तो ये। इसको नॉर्मल लिखेंगे कैसे हम? क्या? अगर हम लिखना चाहें इस चीज को तो कैसे लिखेंगे? लिख लो ना। कैसे बताइए? 25% इंक्रीज, 25% इंक्रीज इज कंपनसेटेड बाय 20% नहीं डिक्रीज। नहीं वो तो सर वो तो लिखा हुआ है, मैं पूछ रहा था कि ये 20 हम जब इसको ना ये वाले फॉर्म अच्छा, इसका 20% 125 का 25 होता है है। ना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ तो मेरे तो इधर 100 का 20% निकाल लो, 20% 125 का निकालना ना। आपने 100 से स्टार्ट किया, 25% इंक्रीज किया, तो ये हो गया 125। अब टाइप 1 में 100 पे जाना है, तो ये हो गया -25 आउट ऑफ 125, ये हो जाएगा 1/5, जो कि होता है 20%। ठीक है। हाइब्रिड है, हाँ एक बार दोबारा से- जरूर देखने पड़ेंगे हाँ। तुम्हें। तो यू हैव हाइब्रिड एक्सेस और ऑफलाइन, तो यू आल्सो हैव टू सी। एक एक बार लेक्चर जरूर देखना आपको। अच्छा, हाँ मैं देख रहा हूँ, कल दिखा देना। लेस देन 30,000 कितना था? 12%। मोर देन 2 लाख कितना है? 6%। मोर देन 1 लाख
is 22%. तो यहाँ हो जाएगा 16 because this total is 22. Between 30,000 to 1 lakh, you have to make total. Tell me what is 12 plus 16 plus 6? 34. And what is 100% minus 34? 66. And that is equal to 990. So 16% we have to find. Okay, God bless you. ठीक है, 66% is equal to 990. What about 16%? ये कर लेंगे. हाँ जी. आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 18. दैट इज पैरेललोग्राम 3/2. 1 मिनट रुक जाओ बस, इनको निपटा दो मैं. दिस इज 3/2. 1 2 3 2. पैरेललोग्राम में क्या फॉर्मूला होता है? सेम एज रेक्टेंगल. 1 + 2 + 3 into 1 + 2. It is 6 into 3 18. So how many parallelograms are there in the given figure? 18. Okay रवि, थर्ड में क्या डाउट है यार? रुको जोशी, जस्ट वेट. हाँ जी, क्या बताओ? ऑप्शनल के बारे में. अच्छा, ऑप्शनल में कंफ्यूज हो, रुको फिर एक थर्ड क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ. थर्ड क्वेश्चन यू डिवाइड इन 3 पार्ट. स्टार्ट विद द स्मॉलर फिगर. ये जैसे ये अंदर है, ऑनलाइन स्टूडेंट जोशी, देयर आर 5 स्क्वायर्स. 1 2 3 4, बिगर वन. देन यू चेक दिस मिडल साइज, ये वाला. देयर आर 5 स्क्वायर्स. 1 2 3 4 5. देन चेक द दिस वन. 1 2 3 4 5. तो 5 + 5 + 5 वी हैव 50. Okay, thank you students. See you tomorrow. हाँ जी, ऑप्शनल में किस में कंफ्यूज हो? पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी. बैकग्राउंड क्या है? कहाँ क्या मतलब कहाँ से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस. कहाँ से? तेलंगाना. तेलंगाना. क्या किया है? BA MA? BA. लास्ट ईयर हुआ है. अच्छा, यू हैव 2 थिंग इन योर GS. हो गया आपका? हो गया. पॉलिटी और सोशल इश्यूज में किस में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? सोशल इश्यूज ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना. गो विद सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी का जो टॉपिक्स है पॉलिटिकल साइंस के इजी लग रहे हैं. हाँ, सोशियोलॉजी में 5 थिंकर्स हैं, वो थोड़ा डेप्थ हो जाएगा. उसके टर्म्स भी बहुत सब. पॉलिटिकल साइंस के तो कॉमन ही है. नहीं, उनकी थ्योरी पार्ट तो दोनों का डिफिकल्ट होगा. पेपर 1 दोनों का थोड़ा डिफिकल्ट साइड रहेगा. पेपर 2 दोनों का इजी रहेगा. पेपर 2 तो इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ना. पेपर 2 उसमें इंडियन सोसाइटी होगा मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया नहीं है. बट पेपर 1 में तो उसमें सोशियोलॉजी में 5 थिंकर है, वो डिटेल में पढ़ने पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनालिसिस. इसमें पॉलिटिकल साइंस में भी थॉट्स है. बोथ आर इक्वली. पॉलिटिक्स में जितने भी टॉपिक्स है सब रिसेंटली अभी सोसाइटी में चल रहा है. अच्छा, ठीक है. तो PSI ले लो. कौन से सही होंगे? यहीं से भी कर लो, सबका चलेगा. ओके. सर मैं कई बार GS के क्वेश्चन लगाता हूँ सर. हाँ. प्रीलिम्स के. तो सर मिस्टेक ये होती है कि मैं अवॉइड नहीं कर पाता, जो क्वेश्चन मुझे आते नहीं, या फिर 1-2 स्टेटमेंट. कोई दिक्कत, GS में कोई इशू नहीं होता, लेकिन अच्छे से पढ़ो ना. आप 2 आंसर में ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपकी डेप्थ स्टडी नहीं है. तो एक बार सेगो सर से मिलो, आधे घंटे के मेंटरशिप में. 100 क्वेश्चन है सर, उसमें से मैं वो क्वेश्चन पहले पिक नहीं करता जो मुझे आते हैं, मैं उनको भी पिक करने लग जाता हूँ साथ साथ जो नहीं आते सर. तो यहाँ पे एरर हो जाता है. इसका कोई इशू नहीं है. GS में 100 के 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे, नो इशू. GS में नेगेटिव मार्किंग इतना हैम्पर नहीं करती जितना CSAT में करती है. GS में क्या करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, आपको अपने कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करना है, ताकि आपके आने वाले क्वेश्चन ज्यादा. आपको ना 15-20 क्वेश्चन एग्जैक्ट आते होंगे, बाकी सब में कंफ्यूज रहते होंगे. आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट आता है, कौन सा कंफ्यूज है, क्योंकि आप कंफ्यूज ज्यादा हो. आपको और डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी, तब जाके आपके क्वेश्चन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होंगे. सर आपने कल वो तो बताई, जैसे
PYQ वाला। सर्कल करो और डन करो, सर्कल करो रिजेक्ट करो या फिर होल्ड करो। वो तो CSAT के लिए है, वो GS के लिए नहीं हेल्प करेगी। वो अप्रोच CSAT के लिए, GS में रिजेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। और सर अभी है ना, जैसे कि एक साथ कई काम चल रहे हैं सर, जैसे अभी GS भी रिवाइज कर लेता हूँ और करंट अफेयर न्यूज़पेपर भी, और सर ऑप्शनल भी चल रहा है और CSAT भी चल रहा है और मेंस के टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं सर। नहीं, 5 चीज मत करो, इनमें से 1-2 चीज ड्रॉप कर दो। फिलहाल ऑप्शनल ड्रॉप कर सकते हो 2 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर उठा लेना क्लासेस खत्म होने के बाद CSAT, या मेंस की टेस्ट सीरीज उस टाइम उठा लेना। एक चीज ड्रॉप कर दो इसमें से, नहीं तो तुम डिस्टर्ब रहोगे, टाइम नहीं मैनेज हो रहा ना। मैनेज कर लेता हूँ लेकिन सर फिर बर्डन बहुत होता है, जैसे 1 आवर के अराउंड सर न्यूज़पेपर और सर एक क्लास डेली ऑप्शनल की होती है। और सर ऑप्शनल वगैरह की टेस्ट सीरीज कैसे अप्रोच? कोई ना, मैं बोलता हूँ, वो तो थोड़ा सा एक्चुअली रवि थोड़ा इशू है, वो तो रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, बट फिर भी मैं इसको जूम आउट करने के लिए बोलता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट को, आई विल आस्क, नहीं उसको स्टाफ को। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, सी यू टुमारो ऑनलाइन। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ सर ऑप्शनल वगैरह की टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करें? कर दो एंड, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज अभी करूंगे, एक और चीज ऐड हो जाएगी तुम्हारी तो।